हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रिकैप, जहां पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर मार्केट स्टफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विथ एनालाइजिंग निफ्टी फर्स्ट, एंड एज यू कैन सी हियर निफ्टी हैज फॉर्म अ बुलिश हैमर कैंडल on daily time frame, and the second important thing is it has given close above this downtrend channel. So of course it is the positive sign, because 3 day in a row we have a positive close in nifty. But yeah, if you measure the intraday volatility na, like each day nifty has given more than 300 point of rally. और अगर आप आज के मूव की भी बात करेंगे ना ऑन इंट्राडे, then yeah, again nifty has given somewhere around 300 point of rally from the low of the day to high of the day. If you see nifty on intraday time frame, then आपको समझ आएगा कि निफ्टी हैज गिवन ऑल द मेजर मूव from on second half of the market session. If I summarize today's market, like first, Nifty opened flat and Bank Nifty is slightly negative, right? But after the opening session, Bank Nifty recovered and Nifty fell. And Nifty fell somewhere around 0.5 to 0.6%, right? Okay, and made a day low somewhere around 25,150 level. But in second half, but after 11 a.m. when Nifty come, but after 11 a.m. when FII come in the market, Nifty has given somewhere around 300 point of rally. Because if you see, today is the important event, that is the Fed interest rate decision, and they keep their interest rate unchanged, because previously the interest rate was from the Fed side 3.75%, and the actual is 3.75%. There is a no change in the borrowing cost. If you summarize this report now, you will find that they want to keep their borrowing cost at the lowest level since 2022. All right, so और अगर वहीं हम बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखें, सो टुडे इट हैज फॉर्म अ बुलिश मोरोबुजो कैंडल विच इज ए सिग्निफिकेंट reversal signal. Okay, because there is a significant volume here and RSI is also supporting. So if there are nothing negative in budget point of view, then of course we can see significant rally in bank nifty. If you talk about the mid cap and small cap, they are slightly up. It's a dragonfly doji on daily time frame, and small cap में भी हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिला है ऑन डेली टाइम फ्रेम. सो द मेन थिंग इज कि बैंक निफ्टी आज रैली दिया है बिकॉज ऑफ दिस अनचेंज इन फेडरल रिजर्व बैंक. All right, let's talk about the data point of view for Nifty. Not option chain. All right, so as you can see here, everyone sold comfortably put. And if you talk about the data for today, people have sold 1.2 CR of put, and where they have sold only 7 lakhs of call. So yeah, it's a significant difference between call and put. So people are also expecting the market will rally. If you talk about the current open interest data, then as you can see here, earlier we are discussing कि 300 level is the crucial level, because people are sold call and put in equal amount. But today if you see this 300 level data na, then people are again selling the put at 300 level and buy back some call here, because if you see this gap means is जो भी लोग पहले यहाँ पे कॉल की सेलिंग किए हुए थे, ओके, दे क्लोज देयर पोजीशन. और वहीं पे ये जो आप शैडो देख रहे हैं, व्हाट इट मीन्स कि लोगों ने आज फिर से 300 लेवल पे कॉल की सेलिंग की है. सॉरी, लोगों ने फिर से आज 300 लेवल पे पुट की सेलिंग की है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, देन देयर इज ए 8.64 lakhs of new put selling happen at 25,300 लेवल. मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 25,500 लेवल. सो अगर बजट के पहले हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी में, बट ये लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, इट विल डिपेंड ऑन द बजट डेटा.
वहीं अगर हम थोड़ा-सा ब्रॉडर व्यू देखें ऑन ओपन इंटरेस्ट डेटा, देन आफ्टर 25,500 we have a strong resistance at 25,000 and sorry 26,000 level. Okay, let's talk about the FII data for option and future, but the data is not out yet. Okay. All right, guys. So we have talked about the data also. Now let's come to other indices. So on PSU Bank, there is a bearish piercing candle. And if tomorrow this piercing pattern has confirmed by another red candle, then we can see some more profit booking in PSU Bank. Because their PSU Bank are in uptrend since the December. If you talk about the IT is in consolidation phase since December. FMCG keeps falling all day, right? So yeah, there is a no major support for FMCG if this level is okay, if this previous low is break. If you talk about the auto sector, GST कम होने के बाद we have seen a nice rally in auto sector, but somewhere around at this point, which is the first week of January, people started selling, and then it fell down to November level. So if this level will break, then boss, we can see this gap will be fill in upcoming days. Let's talk about the metal. यार metal के बारे में क्या ही बात करना. Silver and gold are making all time high. If you talk about the Pharma looks also bearish here. And it okay, and right now it trading at a crucial level. Let me draw it. All right. So if this level is okay, so if this support is break, then in Pharma we can see more downfall in upcoming days. Okay, VIX is still high due to the volatility in the market. All right, guys, let's talk about the rest of the things. USD versus INR. It's a flat. Crude oil is up by 3%. ठीक है, जैसा कि हम पहले भी क्रूड ऑयल के बारे में बात कर रहे थे. If there is a strong breakout for this trend line and also this triangle pattern, then we can see some rally in crude oil. And if we talk about the trade and all, first we need to wait for this first we need to retracement for this rally, and then if it move and if it will move higher side, then we can make some long position in crude oil. I hope you understood here, right? Let me draw the pattern as well. हमें कुछ इस तरह का रिट्रेसमेंट चाहिए होगा, फिर इसके बाद अगर ये हायर साइड मूव करता है, देन ऑफ कोर्स वी कैन मेक सम लॉन्ग पोजीशन. गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में क्या ही बात करना, दे आर कंपीटिंग इटसेल्फ. बिटकॉइन इज इन कंसोलिडेशन फेज यार. सो जब तक कि हमें इस कंसोलिडेशन फेज का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं मिलता है, आइदर हायर साइड और लोअर साइड, एंड स्पेशली ऑन डेली टाइम सॉरी ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तब तक यार आई डोंट थिंक कि बिटकॉइन ऊपर या नीचे कहीं भी जाने वाला है. All right, guys, I think we have talked about everything. Now let's come to our stock specific. So SBI is slightly up. Bajaj Auto is up by 1%. In SBI, now, our target is somewhere around 1075. Sorry, let me check the Bajaj Auto. Sorry, SBI target. समवेयर अराउंड 1077. और आज के अगर हम हाई की बात करें, सो हाई इज 1075. सो आई एम होपिंग कि कल हमारा SBI में भी टारगेट हिट हो जाए. बजाज ऑटो इज अप बाय 1%. लेट मी चेक द बजाज ऑटो चार्ट. बट स्टिल यार, जहाँ पे हमने ट्रेड लिया था वो उसके नीचे ही अभी हम ट्रेड कर रहे हैं. कोल इंडिया इज अगेन अप बाय 2.5%. But our target is very long in crude oil but our target is very long in coal India. Let me check the target. Yeah, if you see, we have a 20% of target in coal India, and जो कि एक मूव पे आ सकता है, राइट? बिकॉज जिस तरीके से ऑयल ने मूव दिया है इन लास्ट 2 days, yesterday oil has given somewhere around 10% of move, जहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ. और आज की बात करें
तो आज भी ये ऑयल जो है वो 5% अप था। तो कुछ इस तरह की रैली में हम कोल इंडिया में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अपकमिंग डेज, so that we can achieve our target. If we talk about the JSW Steel, then today I have made one new position at JSW Steel, and the price and all you can find on this sheet. I will update in a bit moment. Okay, I will update rest of the detail in this sheet. Okay, our risk to reward is 1.3 in this trade, so you can find all of the details in this sheet. देयर इज ए टू स्टॉक इन स्टील सेक्टर। सो यार टाटा स्टील जो है ऑलरेडी इतना मूव दे चुका है। सो इफ यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है, आई मीन इफ अगर मूव दिखा जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है, देन वी कैन मेक पोजीशन इन टाटा स्टील ऑल्सो। बट अगर हम जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील की बात करें, सो मैं जेएसडब्ल्यू में ही पोजीशन इसलिए बनाया बिकॉज देयर इज ए सम रिट्रेसमेंट, और एज कंपेयर टू टाटा स्टील उतना अच्छा मूव अभी आया नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा बिकॉज दिस इज द नाइस रैली, तो ऑफकोर्स रिट्रेसमेंट के बाद मैं जरूर से इसमें भी पोजीशन हम बना सकते हैं। If you talk about the HCL and all of things, then yeah, these are trading at the crucial level. I mean somewhere around the previous resistance zone. तो अगर इस resistance को ठीक है, तो we need to track how HCL and other IT stock is behaving at their previous resistance zone. और इसीलिए मैंने इस HCL स्टॉक को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। TVS मोटर एंड ऑल, हाँ यार इस TVS मोटर, okay, let's see what will happen in TCS Motor. Tech Mahindra, okay. In Tech Mahindra, we have to wait for the closing above this previous resistance zone. If we talk about the भेल में क्या हुआ था? हाँ, like today there are some profit booking in भेल. So अगर ये इस मूव का retracement दिया है, which is a good. Let's see how it is trading at this level. I am hoping that it will spend some time here and then it will give its next rally. All right, guys, I hope I have talked about everything. So the main takeaway from this video is the way these three candle has formed. It looks like this is the bottom out for this downtrend channel, and we can see Bank Nifty will be come back in this okay, in this channel, okay, and we can say कि Bank Nifty will rally up to this level. All right, but everything heavily depend on the budget. All right, guys, that's it for today's video. I hope you enjoy it. If you are new to the channel, please make sure to do subscribe so that you will get a daily market update.